આજે સાબર ડેરીમાં સામાન્ય સભા યોજાશે। પશુપાલકોના વિરોધ બાદ આજે સામાન્ય સભા મળવા જઈ રહી છે। સામાન્ય સભા પહેલા પશુપાલક ચેતન પટેલની ચીમકી સામે આવી છે। પશુપાલકોના હિતમાં નિર્ણય નહીં લેવાય તો આંદોલનની ચીમકી તેમણે ઉચ્ચારી છે। અગાઉ પશુપાલકો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું। સાબર ડેરીએ 395 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ફેટે જાહેર કર્યું છે। પશુપાલકો 20% ભાવફેરની માંગ કરી રહ્યા છે। कदाच हूँ जाणु छूँ त्यार सुधी हजी वार्षिक अहेवालनी कॉपी तो कोईने मळी नहीं होय एटले प्रथम तो आ सभामां अंदर एंट्री लेता पहला अने एंट्री लीधा पछी अंदर प्रथम मुद्दो एक आ रजूआत करजो कि आपना एवा तो कया गोटाळावाळा हिसाबो छे कि जेना अहेवालनी कॉपी आप तैयार करी समयसर जे 5-7 दिवस पहला मोकली आपवानी होय छे मोकलाई नथी। सरकारश्रीनी आ तबक्के आ विडियोना माध्यमथी जणावी रह्या छीए कि आप पण हजी सुधी जे आ मुद्दा पर ध्यान नहीं आप्યું એ ખોટું છે। आगामी दिवसों में चूंटणीओ आई आज 3.5 लाख पशुपालक परिवारों मतनी आपने जरूर पड़शे। अमने न्याय मळे ए दिशा में दरेक दूध मंडळीना चेरमेनश्रीओ साबर डेरीनु बोर्ड ऑफ डिरेक्टर ने चेरमेनश्री प्रयत्न करजो न कि आवनारा दिवसों में अमारा चोक्कस मुदत सुधी धरना पर बेसवानी अमरनाथ उपवास पर बेसवानी फरज पड़शे। एनी खास नोंध लेशो। आभार।